Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the statements in QBasic. मतलब QBasic प्रोग्राम को लिखने के लिए जो बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम लोग आज समझेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे और थ्योरेटिकली भी समझेंगे, ठीक है ना। सो नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट, let statement. So let statement, why we are using the let statement? It is used, let statement is used to assign, is used to assign a value to a variable, it is used to assign a value to a variable. Okay, so let statement is used to assign value to a variable. So suppose we can write like this: let a is a variable, now so this variable, suppose I am writing like this. So what is it? Let statement, this is a let statement. This statement is used to assign a value to whom? To the variable a, not only any variable you can take, suppose x. So let statement here is used to assign the value on the it is used to assign the value 100, assign the value 100, it is used to assign the value 100 to the variable x, okay. And one more point here you have to understand is important point. So this statement is used to assign value to a variable. Let statement is optional. Let statement is optional. Let statement is optional. While is optional while assigning the value to variable. Let statement is used to assign a value to a variable. And second point is let statement is optional while assigning the value to the variable. Now, so here I am assigning 100 to the variable x. Okay, so for assigning the value 100 to the variable x, we are using the let statement. Let statement is used for assignment. So we can, it is what the second point is, let statement is optional, means we can assign the value to the variable x like this also. Why? Because this let statement is optional. Let statement is optional. If you want to write let statement for assigning the variable, then you can use. If you don't want to use, don't use. That means it is optional. It is not mandatory for assigning the value to a variable. So अब इसको हम लोग practically भी देख रहे हैं. So see here, let a is equal to 100. A is equal to 100. Now, so here what? A is a variable. In this variable, 100 is assigned. Now print of a. Now here is the so whatever the value is in the variable a will be printed. So run start. Now see the value in the console is 100. Okay. So one more thing, see here. So here I am assigning the value to the variable a, to the numeric variable. A जो है numeric variable. Already ये सब आप लोग को बता चुके हैं. So a is a numeric variable. 100 is a numeric constant. We are assigning a statement का मतलब हुआ we are assigning a numeric constant to a numeric variable. We are assigning a numeric constant to a numeric variable, and here we are printing. What we are doing? Printing the value of the value stored in the variable a. Whatever the value in the variable a, we are printing with the help of print statement. Okay, so using the print statement, we are printing the value of a in the console. Console पे black screen जो आ रहा है ना, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये let statement यूज होता है for what? अभी बताया let statement यूज होता है for assignment. Let statement is used for assignment. So this let statement is used for assigning a value to a variable. But another part I have told,
that let statement is optional while assigning the value to a variable. Means like this also you can write. Now see here. Now see. So another variable I am taking here. So I am removing this. Another variable I am taking. What? Suppose C equal to 100. C equal to 100, and now I am printing the value stored in the variable C. So I am not using the latest statement for assigning this numeric constant 100 to the remove this one 100. Otherwise, suppose 250, I am assigning the 250 numeric constant 250 in the variable C. In the numeric variable, but I am not using the latest statement. यहाँ पे latest statement नहीं यूज करना, ठीक है ना? Now run. See the output. So it is coming what? 250. Why 100 is also coming? It is the previous output. Previous output means CLS अभी लिखते हैं, बताएंगे CLS किस लिए यूज होता है वो भी बताएंगे, ठीक है ना? And now I am changing here. So value stored in suppose C, suppose 450 I am storing. 450 स्टोर कर रहा है कहाँ पर? C वेरिएबल में, और यहाँ पे लेट स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं. भाई लेट स्टेटमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी, इट इज अ ऑप्शनल. अगर हम लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है तो हमें अगर मन करे तो लेट स्टेटमेंट यूज करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं यूज करेंगे. इट इज अ ऑप्शनल स्टेटमेंट. नाउ रन दिस वन, स्टार्ट. नाउ सी हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू 450. हम लोग को 450 मिल रहा है, ठीक है ना? 450 वी आर एबल टू प्रिंट इन द कंसोल. ब्लैक स्क्रीन में जो आता है उसको कंसोल बोलते हैं. तो कंसोल में हम लोग 450 को प्रिंट कर रहे हैं. 450 को वी आर एबल टू प्रिंट. सो इन दिस सेम वे सी हियर another variable I am declaring. Suppose so let statement is optional. Let city dollar equal to what? Suppose Noida. So this is what? String constant. ये string constant है, और ये जो variable है string variable है. Why it is a string variable? Because here in the end of this variable dollar is there. ठीक है ना? अब assignment ये variable string constant नोएडा जो है उसको assign कर रहे हैं city variable में. city variable क्या है? string variable है. नोएडा क्या है? string constant है. string constant को assign कर रहे हैं string variable में. Let statement is not mandatory. ठीक है ना? Now see here. Now I am printing. So print city dollar. Now come to here, start. So अब देखिए क्या आउटपुट आएगा. C वेरिएबल में 450 है. So print of C मीन्स जो C में वेरिएबल C में वो प्रिंट होगा, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ सिटी डॉलर में नोएडा है. तो 450 और नोएडा प्रिंट आउट कराना चाहिए. ठीक है, 450 एंड नोएडा इज कमिंग. नाउ सी. So I am removing this latest statement. Why? Because latest statement is optional. I am changing the here Noida to Delhi. In order to show that latest statement is optional. String constant अगर असाइन करना है स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो सी अब न्यूमरिक कांस्टेंट जो है असाइन कर रहे हैं न्यूमरिक वेरिएबल में. एट दैट टाइम आल्सो व्हाट लेटेस्ट स्टेटमेंट इज हियर. इफ यू वांट टू राइट like this, c equal to 450, or if you don't want to write, don't write. Okay, so here also same. If you don't want to write late before the city, then also this assignment is possible. Correct. Now run this one. 450 of the least coming or not. That means इससे क्या पता चल रहा है? This shows that let statement is optional while assigning the value to a variable, while assigning the string constant or numeric constant to the variable. So this one is the first. Let statement is the first statement. Let statement हमारा first statement है. Some more points are here. Just wait a minute. Some more points are also here. What? अब देखिए, I am see here. So this is what? Only I am writing C equal to
anything, k equal to x is equal to मैंने लिखा, so I am writing double quote what Sachin. Now see here, जो भी थ्योरी बताया था सारा उसका प्रैक्टिकल अभी करा रहा हूँ. See here, so Sachin is what? Sachin is a string constant, and I am assigning the string constant in the variable x. And what is the type of the variable x? Variable x is of the type what? Numeric variable. Means I am assigning a value string constant in the what? Numeric constant. So is it possible? अगर ये possible है, नहीं है. क्यों? In the string constant, this is what? String constant. We can assign string constant to the string variable only, not numeric variable. अगर हम इसको रन करते हैं, here print of x लिखते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं x में जो भी वैल्यू, सपोज अगर रन कीजिएगा, देखिए क्या हो. स्टार्ट में जाते हैं, सी व्हाट इज दिस? टाइप मिसमैच, एरर इट इज कमिंग, इट इज शोइंग द एरर. व्हाट? टाइप मिसमैच. क्लिक ऑन ओके. सो इट इज शोइंग व्हाट हियर? व्हाटएवर द वैल्यू वी वांट टू स्टोर, that value is of the type what? String constant. So it must be stored in which type of variable? String variables. Because of that here if you run also, click on start, देखिए यहाँ पे टाइप मिसमैच दे रहा है, और ओके पे क्लिक कीजिएगा, ये बता भी देगा कि कहाँ पे टाइप मिसमैच है. यहाँ पर that is this variable must be, this variable should be what? Of the nature of the type string variable. अब ये कैसे string variable होगा? At the end you have to write dollar. At the end you have to write dollar. So now run on this, click on start. Okay, so we are able to get the value or not? We are able to get the value, but why we are getting here 0? If we run here, we are getting 0. Why? Garbage value. Garbage value means there is no variable x. This is what? यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, x डॉलर स्ट्रिंग वेरिएबल. बट अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ x लिख रहे हैं, मतलब ये एक वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल. ये है न्यूमेरिक वेरिएबल. डिफॉल्ट वैल्यू न्यूमेरिक वेरिएबल का क्या होगा? 0 आता है. अगर इसी को हम लोग यहाँ पे डॉलर लिख दें, सो ये डॉलर लिख देंगे तो ये एक्स वेरिएबल हो गया. ठीक है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया. अब इसका वैल्यू सचिन प्रिंट होगा. सीधा तो स्ट्रिंग, इससे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग वेरिएबल में ही असाइन होगा. वी कैन ओनली असाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट इन द स्ट्रिंग वेरिएबल. ओके, नाउ कम टू, आई एम रिमूविंग दिस वन. न्यूमेरिक का भी दिखा रहा है. नाउ वन मोर थिंग, सपोज आई एम राइटिंग हियर व्हाट? मार्क. सो मार्क इज वन ऑफ द वेरिएबल. नाउ इक्वल टू, हियर आई एम राइटिंग व्हाट? Here I am writing 1, 2, 3. So what is this? This is a numeric constant. I am assigning the numeric constant value in the variable what? Which type of variable? Numeric variable. So if you print the value of mark, then we will get mark is a variable. So click on run, click on start. Now we are able to get the value 120. No error, no problem. Now see here 123 is a numeric constant. I am assigning this numeric constant in the variable string. See here, right now it is a numeric variable. If we put dollar at the end, now it becomes a string constant, string variable. Now run this one. Click on start. What is this? Type mismatch. Where is the type mismatch? See here, where is the type mismatch? In the mark. Why? The name, this one is numeric constant. We can assign numeric constant in the numeric variable, but this variable is of the type string. The nature of this variable is string variable. So remove this dollar. Now this variable is numeric type of the variable. Now run, start. Now see 120. So this also is clear. Now see the next point. The next one is print statement. So here see, let a statement is over. Next one is why we are using the print statement. Next statement is print statement. So why this print statement is used? What is the, why we are using the print statement? Now come.
So this statement, this means print statement. Print statement is used to display. It is used to display the numbers. It is used to display the numbers. It is used to display the numbers. Comma message, or value of variables, on the output screen. Now using this print statement, we can print the value of numbers, any message or any value of the variables on the output screen. So practically दिखा रहा है। अब देखिए everyone see here. So using this print statement, we can print the value. We can display the number. Suppose I want to display 45. So print 45. This is what? A number, just a number. So print 45. We are able to display any number. So whether it is so this means we are able to display any numbers. Any number means any what? Numeric constant. Number means programming में इसको numeric constant बोलते हैं. So we can display any numeric constant. Suppose 45.35. Click on run, start. So we are able to display. See here, we are using this print statement. We can display the numeric constant. Where we can display the numeric constant? We can display the numeric constant in the output screen. This black screen is what? Output screen. This is also called as console or output screen इसको बोलते हैं. So we can display the value. We can display the numeric constant using the print statement. You can display the value of numeric constant where? On the output statement, on the output screen or on the console. Black screen को console बोलते हैं. So we can also display the value of any string constant, like see here, creative minds. We can display like this also. Creative minds. Now click on run. Start. Now see 45.9 means numeric constant, string constant. Both we are able to display. Creative mind, international. Now, so another one I have told we can display either numeric constant or message. कहने का मतलब what is this? One message. इसको string constant बोलते हैं, इसको message भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? Message और value of variables. किसी भी variable के value को भी हम लोग suppose a is equal to 100. Now we can print what? A is what? A is a variable. So we can print the value of variable using the print statement on the console. Now see here, last में क्या 100 क्या ये हमारा जो आ रहा है 45.35 ये numeric constant. ये क्या क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल स्कूल क्यों आ रहा है? स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट और मैसेज के कारण. और 100 क्या आ रहा है? क्यों? वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसके कारण प्रिंट स्टेटमेंट उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है. कहाँ पर? कंसोल पे. और ब्लैक स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं. वी कैन ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कॉन्सेंट लाइक नेम डॉलर इक्वल टू. हियर वी विल राइट सपोज अहाना. प्रिंट सपोज आई एम राइटिंग हियर अहाना Agarwal. Okay, now print what? Name dollar. ये नेम डॉलर क्या वेरिएबल है. सो नेम डॉलर वेरिएबल को प्रिंट करना है. सो यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन प्रिंट द न्यूमेरिक कांस्टेंट को प्रिंट कर सकते हैं. यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ विच वन? स्ट्रिंग कांस्टेंट. कहाँ पर? ऑन द कंसोल और आउटपुट स्क्रीन. We can print the value of what? A is what? Variable. We can print the value of what? Name dollar. What is this name dollar? It is a string variable. Now see here. Okay, so we are able to get this.
click on start. Everything we are about to make. So using print statement, finally we can say using print statement we can display the value of variable. Using print statement we can display the numeric constant. Numbers means numeric constant. We can display any message. Message means string constant or value of variables. Both variables. Which type of variable? String variable and numeric variable. Where? On the output screen. So this is all about your print statement and let statement. So some more statements are there like CLS statement, clear statement and ring statement, input statement. So those three statements we will discuss in the next class. Thank you.